Greetings of the day, students. So today we are going to discuss the chapter number 15, that is playing with numbers. So we should start from the exercise 15.1. So today is 27th August. So today we will discuss the sums that is related with the exercise 15.1. So let us discuss very first sum of the exercise, that is without actual calculation. Without actual calculation, write the quotient of 85 plus 58 when the sum of these two numbers is divisible by 13 and 11. So how we will solve this sum? So firstly we elaborate the first sum. We know that this is a two-digit number. If this is a two-digit number, it made from the two digits. One is at the unit place, one is at tens place. So firstly we write the expanded form of the 85, that is 80 plus 5. After that we will write the expanded form of 58, that is equal to 50 plus 8. Up to this clear to all. So next we move on the next step. So now we want to find the sum of these two numbers, then we will divide these two numbers in 13 and 11 and we get the quotient. 80 plus 5 plus 8 plus 50, that is equal to 88 plus 55. So I take 11 as a common, so it becomes 8 plus 5. Now look, the sum of 85 plus 58 is equal to the product of 11 plus 8 plus 5. Now consider your A is A and your 5 is B. Here is one rule that we will discuss, that is if we have A plus B and B plus A, and when we divide it by A plus B, the quotient is always 11. This is the first rule. The second rule is when we will divide the rearrangement of the numbers and find the sum, and that is divisible by 11, then the quotient is always A plus B. So I think अब आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें हमारा A क्या है? A is equal to 8, B is equal to 5. So put the value of 8 and 5 in the first and second formula, you get the quotient. So when we divide 85 with 58 by 11, we get quotient as 8 plus 5, that is equal to 13. And if we divide this 8 plus 5 and 5 plus 8 by 13, we get the quotient as 11. Clear to all? So shall we move on the next sum? That is, if the difference of 73, without actual calculation, find the difference of 73 and 3 and 7 and find the quotient when the difference is divisible by 4 and the difference is divisible by 9. So let us see how we can do this sum. Say consider the expanded form of 73, that is equal to 70 plus 3, and expanded form of 37, that is equal to 30 minus 7.
30 plus 7. Clear? So after that, we subtract these two equations. So 73 minus 37 is equal to 70 plus 3 minus 30 minus 7. So when we subtract 70 minus 7, the difference is 63 and the difference is minus 27. So the 63 is written as 9 into 7, this is written as 9 into 3. So the difference of 73 minus 37 is represented by the multiple of 9 into 7 minus 3. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब जल्दी से आप प्लस की जगह माइनस कर दो, 11 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो वहाँ पर 9 का मल्टीपल प्लस करेंगे 11 का मल्टीपल बनेगा, डिफरेंस करेंगे 9 का मल्टीपल बनेगा। तो अब हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि इफ वी हैव टू नंबर, वन नंबर in a two digit that may be and we reorder the arrangement and then we divide it by 9. The quotient is a minus b. And if we divide the difference of these two numbers with a minus b, quotient is always 9. So apply this in the second sum and you get the answer. So we know that when we divide the difference with 9, the quotient is 4. And when we divide the difference with 4, the quotient is 9. यहाँ तक आपके दो सम हो गए। Now to discuss third sum. In third sum, there is a three-digit number is there. The number is 842. The number is 842. And when we rearrange the numbers in a cyclic order, then we have to find the quotient. The sum is divisible by 111, 37 and 40. So first of all, say this is A, this is B, this is C. So now पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं, फिर ये सम करेंगे। देखो फर्स्ट ईयर सेकंड सम हमने कैसे किया? पहले हमने नंबर को कैलकुलेट किया, फिर हमने रिजल्ट डिस्कस किया। अब हम थर्ड सम में रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये सम करेंगे। क्लियर? सो दिस नंबर इज ओरिजिनल फॉर्म इज ए बी सी। अब इनका साइक्लिक ऑर्डर मींस ए बी सी, बी सी ए एंड सी बी ए, सी ए बी। दैट इज साइक्लिक ऑर्डर। मतलब जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो सीरीज में आने चाहिए। जहाँ पर सीरीज के अंदर ए बी सी उसका लास्ट पोजीशन में है। सो दिस इज ए बी सी। फिर क्या आएगा? बी को आगे ले जाओ या ए को पीछे ले जाओ, बनेगा बी सी ए। फिर अब बी को पीछे ले जाओ तो बनेगा सी ए बी। दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द number. So when we write any number in a cyclic order, if we divide this number, if the divisor of this number is 111, your quotient is always A plus B plus C. Then you divide this sum of these cyclic order number with the sum of A, B and C, then your quotient is always 111. And if
divide this number by 37, then your quotient is 3 times a plus b plus c. These three rules, these three methods we need in this sum. After this we have another method also, like if we change the condition, like if we divide the given number into 3 times into a plus b plus c, then the quotient is 37. The table of this formula is already given to your to your textbook. So you can see from your textbook at the page number 265. Clear? So now, firstly rearrangement these three digits. So first is 842, second is 428, and third is 284. When we divide the sum of this number with 1111, our quotient should be a plus b plus c, means 8 plus 2 plus 4 is equal to 40. This is our quotient. Similarly, when we divide this number with 14, so the quotient is 111. And similarly, when we divide this number with 37, the quotient is 3 times of the sum of a plus b plus c. What is the sum of a plus b plus c? 14. 14 into 3 is equal to 42. This is your answer. So this is all about exercise 5.1. So in the next part we will discuss exercise 5.2. Start. So now we discuss exercise 50.2. So the 50.2 is solely based on the divisibility rules. So divisibility rules that you already discussed in the class number 6 as well as class number 7. We know that every even number is multiple of 2, so the number is divisible by 2. For divisibility with 3, the sum of each digit should be a multiple of 3. Divisibility with 4, the last digit number must be divided by 4. The divisibility of 5, last number should be 5 or 0. The divisibility with 6, the number must be divisible by 2 as well as 3. So the divisibility with 7, that we will discuss later. Divisibility with 8, last 3 digit numbers must be divisible by 8. Divisibility with 9, the sum of each digits, all the digits must be a multiple of 9 or 9. So divisibility of 10, that is very difficult. So the answer is now, if a number has n unit or a unit digit is 0, that number must be divisible by 10. So next, divisibility with 11, the sum of digits are the Start. test of divisibility with 11. When we check the test of divisibility with 11, we check check the length of the digits, how many digits are there. The digits who are occupied the odd places, we will find the sum of their digits separately, and the even places sum find out separately. Then we find the difference. If the difference is 0 or a multiple of 11, then that number should be divisible by 11, otherwise no. So हमने एक पीछे छोड़ा था नंबर 7 इज लेफ्ट, है ना, वो मैंने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे. अब 7 की बारी आ गई. तो 7 पर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है. हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी 7 करेंगे, हम कोई भी नंबर रैंडमली लिखेंगे, हम लास्ट वाला नंबर को उठाएंगे, हम इसका डबल कर देंगे, 2 2 4. इस 4 को हम इस रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे. इट्स द डिफरेंस of these two numbers is a multiple of 7, then the number is divisible by 7, otherwise
are clear? So shall move on the exercise 50.2. The answer of first sum, the number which is the numbers which is divisible by 2 but not 4 means the number is divisible by 2 only. वो नंबर लिखने हैं जो सिर्फ 2 बार डिवाइड होंगे या सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में नहीं आते. सो द नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 2, देन 6, देन 10. अब उन्होंने पूछेगा कि ऐसा नंबर है 4 के टेबल में जो सिर्फ 4 के टेबल में आए, 2 के टेबल में ना आए. इसका आंसर आएगा there is no such number which is divisible by 4 but not 2. So next question है no, there is no such number which is divisible by 4 but not 2. इसका मतलब क्या है? 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 2 पर डिविजिबल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि 4 2 पर डिविजिबल है. ओके, बट 2 इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 4. क्लियर? 4 द डिविजिबल ऑफ 2, 4 द मल्टीपल ऑफ 2. सो दैट्स व्हाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर आल्सो डिविजिबल बाय 2 बट वाइस वर्सा इज नॉट. नेक्स्ट सम, वी हैव टू राइट द digits or numbers which is divisible by 3 but not 9. Sorry, not 9. Yes, numbers divisible by 3 but not 9. So 6 के मल्टीपल लिख दो, सबसे अच्छा काम तो यही रहेगा. या फिर 3 के मल्टीपल वो छोड़ दो, एक बार 9 आएगा. मीन्स पहले 2 लिख लो, तीसरा स्टेप, फिर 2 लिख लो, फिर अगला तीसरा स्टेप, फिर 2 लिख लो, फिर तीसरा स्टेप. ये मेथड भी आप लगा सकते हो. लाइक 3, 6, 12, 15, 21 एंड 4 एंड 4. उन्होंने हमारे तरफ से 2 ही पूछे थे, हमने 4-5 लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. नेक्स्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 6. द नंबर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 6. सो 2 का मल्टीपल लिख लो, पहले 5 लिख लो, 6 नंबर वाला छोड़ दो, अगले 5 निकल 6 वाला छोड़ दो. ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो. अगर ये अप्रोच नहीं लगाना तो आप ये लिख सकते हो, 2 लिख लो, क्योंकि अगर आप पहले 5 लिखोगे तो उसमें 3 भी आएगा, थर्ड पोजिशन पर 6 आएगा बट वो डिविजिबल हो जाएगा. तो आप पहले 2 लिख लो, 2 4, थर्ड छोड़ दो, फिर 4 6 लिख लो, 6 छोड़ दो, 7 8 लिख लो, 9 छोड़ दो. क्लियर? तो वो 6 के मल्टीपल्स ऑटोमेटिकली छूट देंगे. जैसे अभी हमने नंबर लिखने का 2 पर डिविजिबल हो, 6 पर ना हो, तो ये आएगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड सो ऑन. नेक्स्ट, द नंबर divisible by 2 and 4 but not 8. The number which is divisible by 2 and 4 but not 8. इसका भी एक मेथड है. ये एक नंबर ही लिख दो, नंबर लिख. सो द नंबर्स आर 4, अगला छोड़
दो, फिर अगला लिख लो 4 का टेबल लिख लो, एक एक छोड़कर बात करता हूँ। 4 12, उसके बाद क्या आएगा 20 28, एक एक छोड़कर लिख लो 4 का टेबल, ठीक है। तो नंबर आपके वो लिखे जाएंगे 2 एंड 4 का डिविजिबल होकर एक पर नहीं है, ये मेथड है, क्लियर। सो नेक्स्ट मूव ऑन द थर्ड सम, दैट इज we have a three different digits 2, 3 and 4, and we have to make a three-digit number which is divisible by 2. Make a number from these digits which is divisible by 2. 2 का divisible होना चाहिए, it means number of टाइम होना चाहिए। तो 4 की तो पोजीशन फिक्स होगी, 4 हमेशा यूनिट पर आएगा या फिर 2 यूनिट पर आएगा। अब 4 को फिक्स कर दिया हमने, 2 and 3 और 3 and 2 ये आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर हमने 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पर 3 4 आ जाएगा और 4 3 आ जाएगा। इसके बिना और कोई नंबर नहीं बनेगा, तो 2 का डिवाइड हो बाय यूजिंग these three digits. Next step, the number is divisible by 3. Divisible by 3 का पहले आप इनका सम से कर दो, 9 आएगा, so it means इससे आपने सम से कर दिया, सम आपका 9 आ गया। जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 3 का डिविजिबल होंगे, तो अलग-अलग पोजीशन पे नंबर बना लो। पहले 2 को फिक्स कर लो, 3 4 को आपस में चेंज कर लो, फिर 3 को आगे फिक्स कर लो, 2 4 को आपस में चेंज कर लो, फिर 4 को आगे फिक्स कर लो एंड 2 3 को आपस में चेंज कर लो। बस ये नंबर बन जाएंगे आपके पास, इजी सम है। ये इजी से यस लवली। नेक्स्ट we have some numbers like 35, 142, 35, 142, 200, 750, 190, and last is, sorry, not 190, 109, 109, 625, 130, 625, 130. We have to find the check of the divisibility capacity to 5 and 10. So हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है 5 का कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जिनके पीछे 5 आएगा या 0 आएगा, 10 पर जिनके पीछे सिर्फ 0 आएगा। So write the divisibility numbers that are divisible by 5. So the number is 35, 200, 750, 625, 100, and the numbers divisible by 10 that are 200, 750, 100. जिनके पीछे 0 0 आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई, जिनके पीछे 5 और 0 आएगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस अब हमारे पास 2 सम बनेंगे, अभी करते हैं 3 1 Z 5. This is the number and we have to find the value of Z. Z की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये हमारा नंबर जो है वो 3 पर डिविजिबल हो जाए। तो Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक सम निकालेंगे, क्लियर। सो फर्स्टली we find the sum of each number, that is 9 plus Z. We know that 9 is already a multiple of 3, so Z should be a multiple of 3. So the value of Z varies from 0, 3, 6 and 9. So we know that the divisibility 9 plus 3 is 9. 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 9 plus 3
sum of digits, should be a multiple of 3. Now, in our case, 9 is multiple of 3, so Z is also a multiple of 3. So Z have a value 0, 3, 6 or 9. Is that clear, students? So let's move on the next one. साथ 9 के साथ है, तो हमें 9 के डिविजिबल प्लस भी पता है. Forty-three by is a multiple of 9. हमें गिवन है ये मल्टीपल है 9 का. अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो ये नंबर आपका 9 के साथ डिविजिबल भी होगा. So you know that 43y is also divisible by 9. So 9 का divisibility क्या है? The sum of all the digits is equal to 9. So here you can apply the equation method. 7 plus 5 is equal to 9. So y is equal to 9 minus 7. Y is equal to 2. So the value of y should be 2. That's all about the exercise 15.1 and 15.2. 15.1 has some different rules. 15.2 based on the divisibility test. So next we will discuss 15.3 also. That we will discuss later. Thank you, students. Have a nice day ahead.